Hello learners, myself Parminder Kaur, educator, and welcome to the YouTube channel IGNO, Gunana Girls College 2206. Yes learners, today I will discuss with you development of information system. Its objectives, development steps of typical information system, tools for development of information system, maintenance of information system, updating information system. Let's discuss first introduction. Yes. So, an integrated set of components for collecting, storing, processing, and communication information is called information system. So, the process of storage, processing, and communication is known as information system. Business firms, other organizations, and individuals in contemporary society rely on information system to manage their operations, compete in the marketplace, supply services, etc. Yes learners कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू compete in the marketplace. So for instance, modern corporations rely on computerized information system to process financial accounts and manage human resources. Municipal governments rely on information systems to provide basic services to its citizens and individuals. Use information system to study, shop, bank and invest. So इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर किसी ने स्टडी करनी है, शॉपिंग करनी है, बैंकिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है या ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो उन सब के लिए उनके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, राइट? इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हमारे पास अच्छा है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तभी आप क्या कर पाओगे, मॉडर्न इंडस्ट्री में या मॉडर्न सोसाइटी में अच्छी तरह से आप जो है वो एस्टैब्लिश हो पाओगे. सो एज जैसे कि ये थ्योरी बताई हुई है दैट एज मेजर न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग न्यू कैपेबिलिटीज हैव अपीयर्ड द इंटरवेंशन ऑफ मूवेबल टाइप इन द मिड 15th century and the creation of portable typewriter मीन्स ये बताया हुआ है कि पहले टाइपराइटर आया, टाइपराइटर के बाद कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर के बाद पर्सनल कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब आया. तो ये सारी जो चीजें हैं ये इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बनी. सो एंड जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ that as information system have enabled more diverse human activities, they have exerted a profound influence over society. So many transaction processing systems support electronic commerce over the internet. So among these are system for online shopping. जैसे आजकल की जो सोसाइटी है या आजकल की जो जनरेशन है या जो सिस्टम चल रहा है उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग. सो अदर सिस्टम डिलीवर्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड. कि ऑन डिमांड जो है वो क्या, एजुकेशनल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है और एंटरटेनमेंट भी अवेलेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दैट व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा दैट व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम refers to a system of people. Yes, learners, it is a system.
सिस्टम वर्ड जो है एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है कि सिस्टम ऑफ पीपल, डाटा रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज दैट प्रोसेस द डाटा and information in an organization, and it includes the organization's manual and automated processes. So in simple words, we can say that information system is a collection of system of people, data records, activities, and that process the data and information in an organization. और जो organization है उसमें two types of processes होती है, manual and automated. Manual वो जो उनको अपने register में करके रखनी होती है और automated वो जो computerized होती है. Computer-based information system refers to a specific application software that is used to store data records in a computer system and automates some of the information processing activities of the organization. तो जो automated work है वो सारा का सारा computer के through process होता है. So the following are the some characteristics of information system. 2 marks question आ सकता है, आपको 4 marks का question भी आ सकता है. That define information system and what are the characteristics of information system. So it should be a high quality system that means ऐसा system, ऐसा information system जो user की needs को fulfill करे. Well, वो information system की first characteristics होती है. Number 2, it should reach completion within time and cost estimates. मीन्स अगर आपको कोई सिस्टम, जैसे आपने कोई ट्रेन पकड़नी है, किसी ट्रेन में बुकिंग करवानी है, अगर आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उसका कोई यूज नहीं है. It should work effectively and efficiently in the current and planned information technology infrastructure. It should be inexpensive to maintain. अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ही एक्सपेंसिव होगा तो उसका कोई यूज नहीं है. तो उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है कि ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, an individual or other business may submit a custom order over the web that automatically initiates just-in-time production to the customer's exact specification through an approach known as mass customization. This involves sending orders to the firm's warehouses and suppliers to deliver materials just in time for a custom production run. आने वाले टाइम में जितना भी काम है वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, कस्टम प्रोडक्शन होगा. जैसे कि आप बहुत सारी एड्स में देख रहे हो कि आगे क्या होता था कि अगर किसी ने ऑयल लेना है, हेयर ऑयल लेना है, तो हेयर ऑयल सबके लिए सेम होता था. लेकिन आजकल जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आपके हेयर में आपको किस चीज का के लिए चाहिए. आपको हेल्थ हेयर जो है वो आपके हेयर को स्ट्रेंथन करना है या आपके हेयर जो है वो डैमेज हो गए हैं तो कैसा ऑयल चाहिए, वैसा ही कस्टमाइज्ड ऑयल बनता है. तो जितना भी आने वाले टाइम में प्रोडक्शन होगा वो कस्टमाइज्ड होगा. मींस कस्टमाइज्ड मींस यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगा. ठीक है. So finally, financial accounts are updated accordingly and billing is initiated. Along with the helping to integrate a firm's own value chain, transaction processing system can also serve to integrate an organization over a supply chain. Yes, supply chain includes production, distribution, marketing. ये सारी चीजें आपकी जो है वो supply chain में आती हैं. So this includes all of the various firms involved in designing, marketing, producing, delivering the goods and servicing from raw material to the final delivery. एक और एग्जांपल ये हुई है कि suppose purchasing an item at a Walmart store generates more than a cash register receipt. It also automatically sends a restocking order to the appropriate supplier. एक वॉलमार्ट की एग्जांपल ये हुई है कि अगर स्टोर में कोई चीज जैसे जैसे आउट हो रही है और उसका स्टॉक खत्म हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो ऑर्डर है वो सप्लायर को प्लेस कर दिया जाता है. तो सप्लायर कैन आल्सो एक्सेस ए रिटेलर्स इन्वेंटरी डेटाबेस ओवर द वेब. मींस वेब पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन ही जो सप्लायर है वो इन्वेंटरी को चेक कर सकता है और करेक्टली एफिशिएंटली टाइमली डिलीवरीज हो सकती हैं. तो ये अगेन एक एग्जांपल है supply chain management के. Next is development steps of a typical information system. Yes learners, ये आपका next question बनता है कि what are the steps
to develop a typical information system. So this is known as SDLC. SDLC means System Development Life Cycle or Software Development Life Cycle. In software engineering is the process of creating or altering system and the models and methodologies that people use to develop these systems. So first step इसमें आता है requirement analysis. Second step is design. Third one is coding, testing, and maintenance. So first of all, we will discuss that is requirement analysis. So the first essential or vital thing required for any software development is system. कि सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम हो, right? So also the system requirement may vary based on the software product that is going to get developed. So a careful analysis means सबसे पहले आपके पास requirement means आपने किस चीज के ऊपर system develop करना है उसकी requirements आपके पास होनी चाहिए. So a careful analysis has to be made about the system requirement needed for the development of a product. आफ्टर अगर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें पता चल गई हैं कि सिस्टम डेवलप करने के लिए ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है डिजाइन. सो एनालिसिस एंड डिजाइन आर वेरी क्रूशियल इन द होल डेवलपमेंट साइकिल. क्योंकि अगर आपका रिक्वायरमेंट फेज ही करेक्ट नहीं होगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता कि आपने कैसा सिस्टम बनाना है, तो उसकी डिजाइनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी. सो डिजाइनिंग जो है उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है. सो एनालिसिस इज मेड ऑन द डिजाइन ऑफ द सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड. इन अदर वर्ड्स, database design, the design of architecture chosen, functional specification design, low level design documents, high level design documents and so on. It means कि जब सिस्टम डेवलप होता है तो उसमें क्या क्या होता है. सिस्टम में हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है, हमें आर्किटेक्चर चूज करना पड़ता है, हमें फंक्शनली स्पेसिफाई करना पड़ता है, लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन. So care must be taken to prepare these design documents because the next phase, namely the development phase, is based on the design document. अगर डिजाइनिंग ही प्रॉपर नहीं होगी सिस्टम की तो जो नेक्स्ट फेज है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. सो इफ ए वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एनालाइज्ड डिजाइन document is prepared, it would reduce the time taken in the coming steps, namely development and testing phases of the software development life cycle. Next is coding. Yes, तो next phase है system develop करने के लिए वो phase आता है हमारे पास coding. So this is the phase where actual development of the system take place. अगर हमारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, नेचुरली उसकी क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी. और जो कोडिंग है वो किसके बेस के ऊपर होगी, एनालिसिस और डिजाइन के बेस के ऊपर. सो इट इज बेस्ड ऑन डिजाइन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड इन द अर्लियर फेज. कोड इज रिटन इन द प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी chosen. So after the code is developed, generation of code also take place in this phase. So जो सिस्टम है या आप जो अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो उसके लिए लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं. सी है, आपका जो सिस्टम है वो C++, पास्कल, जावा, मीन्स कोई भी लैंग्वेज चूज करके वो आप बनवा सकते हो, कोडिंग करवा सकते हो. नेक्स्ट इज टेस्टिंग. यस, टेस्टिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि सिस्टम अगर बन गया है तो वो सिस्टम जब एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो कैसा वर्क करेगा. तो दो तरह की टेस्टिंग करी जाती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग. टेस्टिंग बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई एरर तो नहीं है. सो ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर which is not tested would be of poor quality because this is the phase where system developed would be tested and reports are prepared about bugs or errors in the system. So to do this testing phase, there are different levels and methods of testing like unit testing, system testing and so on. So based on need of testing methods are chosen and reports are prepared about bugs. Means environment में आने से पहले bugs को correct करा जाता है, उसको error free बनाया जाता है. So there are number of debuggers or testing tools are available. So different testing methodologies are available to unravel the bugs that were
committed during the previous phases. So next is your maintenance phase. The software will definitely undergo change once it is delivered to the customer. There can be many reasons for this change to occur. Change could happen because of some unexpected input values to the system. Yes, learners कि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन गया तो उसके बाद उसको मेंटेन करना भी जरूरी है. So in addition, the changes in the system could directly affect the software operation. The software should be developed to accommodate changes that could happen during the post-implementation period. Let us discuss each of these to have an overview by an example. एक example ये है कि suppose एक company है ABC which has head office in New Delhi and large number of branch offices in all over different regions. So ABC has over 9,000 consultants in 71 offices across 51 countries. They had a problem to track leaves of employees to ensure accuracy and reduce absentees. वो एक सिस्टम बनाना है जिसमें एम्प्लॉइज के लीव्स को ट्रैक करना है और एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करना है. तो उसके लिए उनको सपोज एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए. तो वो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम आर टू इंश्योर, वो ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे क्या आए, सिस्टम में एक्यूरेसी आए और एब्सेंटिज्म को रिड्यूस किया जाए और लीव्स को ट्रैक किया जाए. राइट. So following are some of the requirements of the information system. इसको डिस्कस करने से पहले मैं समराइज करना चाहती हूँ that we have 5 phases. One is analysis phase, number 2 is design phase, number 3 is coding phase, next is testing phase, and last one is your maintenance phase. Right? So the objective of the system, suppose एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी बनवाना चाहती है जिससे वो अपने एम्प्लॉइज की लीव्स को ट्रैक कर सके. So the following are some of the requirement of the information system. Human resource manager should be able to, number 1, read, write and update masters. Means उन्होंने जो लीव लेनी है वो किस डिपार्टमेंट का कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सी लोकेशन है, कौन सी लीव वो ले रहा है, ठीक है, और किस टाइप और उसके बीच में हॉलीडेज आती हैं या नहीं. नंबर 2, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी. नंबर 2, असाइनिंग राइट्स टू मैनेजर्स टू अप्रूव लीव्स. मैनेजर को राइट देना पड़ेगा कि वो लीव्स को अप्रूव कर सके. रीएलोकेट लीव्स, कैरी फॉरवर्ड लीव्स, एडजस्ट लीव्स को एडजस्ट कर सके. और आपको पता है कि आजकल अगर कोई मेल के थ्रू लीव लेता है वो भी प्रूव है. तो रिसीव ईमेल फॉर अप्रूव लेटर्स लीव, डिजाइनिंग, एडिटिंग, रेफरिंग डिपार्टमेंट लिस्ट, डिजाइन डेजिग्नेशन लिस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो सर्चिंग एम्प्लॉय ऑफ एनी लोकेशन, किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी लोकेशन से सर्च आउट करना, एक्सेट्रा. चेंजिंग पासवर्ड एंड जनरेट रिपोर्ट्स. नेक्स्ट इज हेल्प एम्प्लॉइज इन अप्लाइंग फॉर लीव. अब दूसरी साइड पे जो है वो एम्प्लॉइज को भी क्या करना, उनको फैसिलिटी देनी कि वो अपनी लीव को अप्लाई कर सके, वो अपने पासवर्ड चेंज कर सके, उनको अपने राइट्स पता हो एंड रिसीविंग अप्रूवल ऑफ लीव्स थ्रू ईमेल. हेल्प मैनेजर इन अप्लाइंग फॉर लीव, अप्रूविंग लीव्स, रेफरिंग हिज लीव्स एंड लीव्स ऑफ whom he approved. नेक्स्ट इज चेंजिंग पासवर्ड. Next is technical survey. The next step is to decide the platform on which it needs to be applied. कि हमें ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करना पड़ेगा. So various technologies available are to be surveyed and appropriate decisions need to be taken. Of course, feasibility study is done after knowing what is to be done. Is it possible to do means ये सारा कुछ करने के बाद फिजिबिलिटी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है. मीन्स जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या बनवा रहे हैं,
जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवा रहे हैं क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आएगी, क्या टेक्निकली वो फिजिबल है, क्या ऐसा स्टाफ अवेलेबल है या ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बनवा रहे हैं वो फिजिबल है, क्या इसको हमारा जो स्टाफ है वो ऑपरेट कर सकता है, तो फिजिबिलिटी स्टडी भी जरूरी है। सो इट इज बियॉन्ड द स्कोप, मतलब कि इसमें वो कह रहा है कि अभी आपके लिए ये जरूरी नहीं है, अभी हम सिर्फ एसडीएलसी के 5 स्टेप्स के साथ, और एक उसने एक आपके बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि अगर किसी ने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो ये मॉड्यूल्स बनेंगे अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है, लीव मास्टर, लीव एडजस्टमेंट, देन लीव अप्रूव्ड, देन कंसोलिडेटेड, लीव सपोर्ट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो दैट मॉड्यूल्स में चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, और आपके सिस्टम टू सिस्टम ये मॉड्यूल्स में क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन करना बहुत जरूरी है। A database, what is database? Database is a collection of records. कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड्स है और आप उसको क्या करना चाहते हो, कंप्यूटराइज मेंटेन करना चाहते हो, तो एक डेटाबेस भी होना जरूरी है जो रिडंडेंसी को क्या कर सके, डुप्लीकेसी को रिमूव कर सके। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन शुड बी लेस रिस्पॉन्स टाइम टू वेरियस क्वेरीज, मोर इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट, controlled redundancy, clarity and ease of use, accuracy and fast recovery. So the organization of data in the database aims to achieve data integrity and data independence. Next is coding. Coding should facilitate the identification and retrieval of items of information. The code should be, means जो coding है वो क्या होनी चाहिए, simple होनी चाहिए, easy to understand होनी चाहिए. Next is testing. The main objective of testing is to uncover a lot of errors. मैंने अभी आपको बताया, तो a successful test is one that uncovers as an yet undiscovered error. So एक अच्छा टेस्ट वही है जो अभी तक कोई एरर नहीं पता चली और एरर है उसको भी क्या कर सके, डिस्कवर कर सके. So a good test case is one that has a high probability of finding error if it exists. Next are टूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए अपने इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, राइट? तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए. तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो लर्नर्स. यहाँ पे केस लिखा हुआ है, केस मीन्स कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो द कंसेप्ट ऑफ केस इज CAS is broad and it includes compilers, इसमें compilers आते हैं, project management tools and editors आते हैं. So these modeling tools are usually used to support early phases of software development. Software development के early phases में ये tools काम आते हैं, right? तो यहां से आपने केस के बारे में बता देना है. उसके बाद as already mentioned the term method is a restricted to mean that part of method knowledge. ये आपको करने की जरूरत नहीं, आप यहां से आ जाओ. GDSS, ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, GDSS ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, GSCW कंप्यूटर सपोर्टेड cooperative work and requirement engineering tools can be used in gathering information and organizing it in a structured format so that it can be used in later phases of software development. यहाँ आप केस टूल के बारे में इतना बता दो, सिर्फ डेवलपमेंट तक, ये देखो यहाँ तक डेवलपमेंट तक बता दो, राइट? फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओ यहाँ पे केस टूल के ऊपर. The case tool supports methods such as conceptual data modeling. ER मॉडल बनाने में केस टूल आपकी हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस करने में, डिजाइनिंग करने में हेल्प करते हैं. So most case products nowadays focus on supporting object oriented methods and recently tool support has been extended. ये लिखने के बाद फिर आप बता सकते हो कि ये हमारे पास दो सिस्टम है, कौन कौन से, GDSS as well as GSCW, right?
Next is method tool companionship. Though the technical realization of companionship between tools and methods can vary, the need to integrate tools and method is obvious. So, on the other one hand, tools mechanizes operations कि ये operations को automate करते हैं by method, by storing system representation, transformation representation from one type of model to another, and on the other hand, these tool empowers users और users को क्या करते हैं empower करते हैं by enhancing correctness, checking and analytical power by freeing them from tedious documentation tasks कि बार बार आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है एंड प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर कोऑर्डिनेशन और बहुत सारी एक्सेस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन टूल्स के थ्रू सो द कंपेनियनशिप बिटवीन टूल्स एंड मेथड has also evolved in response to technical innovation. So these require extension to existing methods or entirely new types of methods to support their development. Next is case tools do not provide the same level of support for all types of method knowledge. For example, there are more tools that support model building की सिर्फ case tools के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते. There are another tools जो मॉडल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं and checking them. They are tools that guide processes or provide group support. So naturally, some aspect of methods lend themselves more easily to automate than others. So abstraction deals with case tools support for capturing and representing aspects of object system. Next is your remarks on modeling tool support. So in the majority of current case tools method integration has been implemented only partially कि अभी तक ये थोड़े से ही case tools को हम use कर सके हैं. Tool developers have concentrated more on producing technical solutions such as repositories and intelligent knowledge-based posts in their products, while the methodical part has been given a lower priority. Means जो ज़्यादा stress है वो डेवलपर्स का किसकी तरफ है कि टेक्निकली जो है वो सिस्टम को क्या किया जाए साउंड किया जाए उनमें इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करी जाए इम्प्लांट करी जाए सो दैट जो प्रोडक्ट हैं वो इंटेलिजेंट और नॉलेज बेस्ड बने सो हार्डली एनी केस टू डेवलपर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड मेथड व्हिच हैज बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर केस एनवायरनमेंट इसमें आपको सिर्फ इतना ही देने की जरूरत है नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यस वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में आ सकता है कि जब हमने सिस्टम को टेस्ट कर लिया और हमने सिस्टम को मेंटेनेंस फेज में भेज दिया तो मेंटेनेंस जो है वो कितने टाइप की है तो यहाँ पे 3 टाइप की है गिवन है करेक्टिव मेंटेनेंस अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस So what is corrective maintenance? Corrective maintenance means repairing, processing or performance failure or making changes because of previously uncorrected problems or false assumptions. Corrective के अंडर क्या क्या आता है repairing, processing और performance failure और making changes because of unexpected problems. कि अगर कोई unexpected problem आ जाती है या कोई फॉल्स असम्पशन के कारण प्रॉब्लम आ जाती है उसको करेक्ट करना जो है वो किसके अंडर आएगा करेक्टिव मेंटेनेंस के अंडर नेक्स्ट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस इट मींस चेंजिंग द प्रोग्राम फंक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स कि अगर आपने कोई सिस्टम डेवलप करवा लिया है या सॉफ्टवेयर बनवा लिया है तो उसको कुछ हार्डवेयर की जरूरत है या कोई पर्टिकुलर टूल्स की जरूरत है तो वो चेंज करना जो है वो किसके अंडर आएगा अडेप्टिव मेंटेनेंस के अंडर नेक्स्ट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस मींस एनहांसिंग द परफॉर्मेंस और मॉडिफाइंग द प्रोग्राम्स टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर एडिशनल और चेंजिंग नीड्स जैसे कि आपको पता है कि जो यूजर है उसकी नीड्स चेंज होती रहती हैं तो उसकी चेंजिंग नीड्स को एडजस्ट करने के लिए जो मेंटेनेंस करी जाती है उसको
परफेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस इज एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू प्लान। तो मेंटेनेंस जो है वो आपको पता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट लेना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, सॉफ्टवेयर बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बनवाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। So maintenance is expensive. One way to reduce maintenance cost is through maintenance management and software modification audit. So software modification consists of program rewrites, system level updates and re-audits of low ranking program to verify and correct the soft spots. So the outcome should be more reliable software, a reduced maintenance backlog, and a higher satisfaction and morale among the maintenance staff. तो कहने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस जो है वो बहुत मुश्किल है, तो डेवलपर ऐसा होना चाहिए जो प्री हैंड ही क्या कर सके, उन एरर्स को क्या करे, रिमूव कर सके, सो दैट यूजर को हाई सेटिस्फेक्शन मिले। Next is updating information system. The evaluation phase ranks vendor proposal and determine the one best suited. Evaluation of the system is performed to identify मीन्स अब हम कैसे अपडेट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, इट मीन्स हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपडेशन की तरफ जा सकते हैं। First is operational evaluation. So assessment of the manner in which the system function, including case of use, response time, overall reliability and level of utilization. Operational evaluation means कि जो चीज आपने बनाई है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, इट ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन की जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो फाइनेंशियली जो है वो क्या होना चाहिए, कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए और ऑपरेशनली उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूजर मैनेजर असेसमेंट, evaluation of the attitudes of managers within the organizations as well as end user. Next is development performance. It evaluates the development process in accordance with such yardsticks as overall development time and effort. कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो हमारे पास एक प्रॉपर टाइम और शेड्यूल होना चाहिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन क्या है, कंपनी की बजट में है, विद इन टाइम वो डेवलप होगा और उसको ऑपरेशनली मीन्स को ऑपरेशनली वो क्या होगा, साउंड होगा और मैनेजमेंट की क्राइटेरिया को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। राइट, सो ये अपडेशन के अंडर आता है आपका। तो अगर हम समरी देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रिंग न्यू ऑप्शंस टू द वे कंपनीज इंटरेक्ट। यहाँ से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, समरी जो गिवन है आपकी बुक में, द वे ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड एंड द वे वर्क प्लेसेस आर डिजाइन। ये सारी चीजें जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। सो इन जनरल यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन सिग्निफिकेंटली lower cost of communication among workers and firms and enhance coordination on collaborative projects. So this has led many organizations to concentrate on their core competencies and to outsource other parts of their value chain to specialized companies. तो यहाँ से भी आप इसका जो है वो डेफिनेशन दे सकते हैं। Information system built around portable computers, mobile devices and groupware have enabled employees to work not just outside the corporate offices but virtually anywhere. मीन्स कहीं से भी जो एम्प्लॉइज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इन प्लेस मीन्स कंपनी के अंदर ही इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डिवाइसेस
लाइक मोबाइल हो गया आपका या पोर्टेबल कंप्यूटर्स, दे कैन virtually connect with each other. So work is the thing you do, not the place you go to. So आजकल का जो टाइम है उसमें ये है कि आपका काम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाके होना चाहिए। जैसे कि इसके लिए मैं लर्नर्स एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज है जिसको आपने क्या करवाना है, उसमें मॉडिफिकेशन करवानी है, तो जरूरी नहीं कि आप उस प्लेस पे खुद जाओगे और मॉडिफिकेशन करोगे। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको कोरियर भी करवा सकते हो। कोरियर करवाने के बाद वो जब ठीक हो जाए तो आपको वो वापस मिल जाता है थ्रू कोरियर ही, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करो और जिसने उसका करेक्ट करना है, उसमें कोई चेंजेस करनी है, वो अपना काम करेगा। सो वर्क इज द थिंग यू डू, नॉट द प्लेस। मीन्स वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आजकल जो काम है वो स्मार्ट वर्क का टाइम है, ना कि हार्ड वर्क का टाइम है। लोग जो पहले कहते थे कि नहीं पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाके ही हम कोई पर्टिकुलर आइटम को ले सकते हैं, लेकिन आजकल वो जरूरी नहीं है। सो वर्चुअल मार्केट वर्क प्लेसेज इंक्लूड होम ऑफिसेज, regional work centers, customer premises, and mobile offices of people. So employees who work in virtual workplaces outside their company's premises are known as telecommuters. उसको हम क्या बोलते हैं, नई टर्म आपको पता चलेगी, telecommuters बोलते हैं। तो इसके साथ आपका ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसके जो फेजेस क्या क्या हैं, अपडेशन के बारे में आपको बताया। अपडेटिंग अगर हमने करनी है इंफॉर्मेशन सिस्टम की तो क्या क्या करना होगा, डेटाबेस डिजाइन के बारे में बताया, फिर आपको मेंटेनेंस के बारे में बताया। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टूल्स कौन से चाहिए, तो केस टूल चाहिए हमें इसमें, राइट। और शुरू में हमने इसकी फेजेस करे थे एसडीएलसी का, फिर उसके पहले फीचर्स करे थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आई होप आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो समझ लगी। तो ये आपके थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर था जो अब हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज नोन एज MIS। यस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है MIS के ऊपर, दैट व्हाट इज MIS। This is a three-letter acronym: Management of Information System, Purpose of Information System, Types of Information, Definition। ये सारी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So what is the objective of Management Information System MIS? ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। So information has been and always will be the foundation stone, and management information system encompasses to overview to the foundations, technology and applications of management information system। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। So what is management information system? First of all, we ought to know the meaning of three different terms। कि हमें तीन टर्म्स का पता होना चाहिए: मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम इन accumulation। Management information system is an old management device which has been extensively used by people। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं MIS वर्ड को। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आज के टाइम में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्राइमरली रिलायंट अपॉन इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन जो है वो वाइटल इंग्रेडिएंट बन गया है मैनेजमेंट का। सो इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बार बार वही चीजें रिपीट करेगी हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। दैट व्हाट इज M? व्हाट M stands for? We stand for management। What is management? We can define management in many ways like manage man tactfully। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज मैन टैक्टफुली, जो टैक्ट के साथ अपने एम्प्लॉइज को मैनेज कर सके। ये एक आर्ट है जो मैनेजमेंट के साथ पास होता है। मैनेजमेंट is an art of getting things done by others। However, for the purpose of management information system, management comprises the process and activity that a manager does in the operation of their organization। जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं? वो प्लान करते हैं, डायरेक्शन देते हैं
ऑर्गेनाइजेशन करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं ऑपरेशंस को. Information means processed data, or in the layman language, data which can be converted into meaningful and useful form is known as information. Next is system. The system can be explained in the following ways. System can be defined as a set of elements joined together for a common objective. कि अगर हमने कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो उसके लिए हम ग्रुप ऑफ पीपल को ले सकते हैं और एक सिस्टम बना सकते हैं. तो अगर हम MI वर्ड यूज करें, MI मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. इट मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट, उनकी पॉलिसीज क्या हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट, लाइक द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट. की मैनेजमेंट की हायरार्की क्या है. देन IS information system which provides information. Next is SM. System management means how to deal with a system, whether it is a business organization, computer system, etc. Next is SI. SI stands for system information. It means the information regarding the system, like what are the dissimilar part of the system. Next is IM. IM means information management, means how to handle particular information, and MIS means management information system. Next is functions of the management. मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन करती है. अभी हमने डिस्कस करा कि प्लान करना. प्लानिंग इज द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. अगर वो प्लान ही नहीं करेंगे, अगर उनका व्यू ब्रॉड नहीं होगा, वो नैरो माइंडेड होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं कर सकते. तो मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले क्या करती है, प्लान करती है. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन आती है. ऑर्गेनाइजिंग इज द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ रिक्विजिट ऑब्जेक्टिव्स, कि जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सोचा है फुलफिल करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है. तो उनका जो फोकस है वो होता है किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू अकम्प्लिश, कि लोग की अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी, सो दैट एक पर्टिकुलर फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम में वो अपना काम कंप्लीट कर सके. इट इंक्लूड्स मेकिंग असाइनमेंट्स, corresponding procedures, seeing that mistakes are corrected, providing on the job instruction, and of course issuing orders. So the purpose of directing is to control the behavior of all personnel to accomplish the organization mission and objectives. Next is staffing. Staffing requires recognition of human resources needs, filling the organizational structure and keeping it filled with competent people. कि अपने स्टाफ में कॉम्पिटेंट पीपल को रखा जाए जो मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजिंग को, उनके डायरेक्शन को समझ सके. सो रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड कंपनसेटिंग आर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द फंक्शन. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, कंट्रोल करना. सो कंट्रोल इज द कोर्स ऑफ एक्शन that measures present performance and guides it towards some predetermined goals. Next is purpose of information system. Information system की जरूरत क्यों पड़ी? What is the main purpose of an information system? So as we know that information system is a set of interacting artifact and human activities that performs one or more functions involving the handling of data and information, including data collection, creation, editing, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, processing, storage and information selection, filtering, aggregation, etc. ठीक है, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, information बोलते हैं. So information system is a sum of computer subsystem and social system which is totality like a shape. इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स कंप्यूटर सिस्टम और इसमें सोशल सिस्टम भी इंक्लूड होता है. ये देखो डायग्राम है इंफॉर्मेशन सिस्टम की. इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है वो क्या क्या इंक्लूड होगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. हार्डवेयर जिसमें सर्वर कंप्यूटर्स आता है. नंबर 2 डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स.
जब उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन इंफॉर्मेशन एनालिसिस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देन उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, एंड द फिफ्थ पार्ट इज योर पीपल, राइट. So this is a diagram of information system. जब आप information system को define करोगे तो ये diagram आप draw कर दोगे. That it includes people, it includes facts and figures, data, hardware, etc. Next is types of information system. Most expected question paper में आता है. Types of operating system. First we have transaction processing system. Transaction processing system handle routine information system more often than not manipulating data in some constructive way as it enters or leaves the forms databases. An order entry program is an example of transaction processing system. डे टू डे की जो हैंडलिंग है वो किसके अंडर आती है? टीपीएस के अंडर. So reason for TPR recording, classification, storing, calculation, etc. Next is management information system. Management information system make available a focused vision of information flow as it develops during the course of business activity. So this information is constructive in managing the business. Next is decision support system. There are a number of decision support system available in the market. So decision support system क्या काम करते हैं? They are the methodological model used to progress managerial or professional decision making by bringing significant data to a manager's notice. So in many cases, this system use the identical data as management information system. Next is office automation system. It includes word processor, MS Office. तो जो ऑफिस के काम को हेल्प करते हैं ऑटोमेट करने के लिए उसको हम ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं. नॉलेज वर्क सिस्टम, आने वाले टाइम में नॉलेज वर्क सिस्टम वर्क करेंगे. Information system that gives support to knowledge workers in the creation and integration of new knowledge in the organization. So knowledge work system and office system provide the information needs at the knowledge level of the organization. Next is executive support system. इसको हम ESS भी बोलते हैं. So information system that information system at the organization strategical level जिसमें जो उनको strategy बनाने में help करती है, that is known as executive information system. तो ये आपके पास diagram है. Types of information system. First is TPS, transaction processing system. ठीक है, इसके अंडर आपका क्या क्या आता है? मीन्स जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो आती हैं. सेल्स एंड मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, देन नॉलेज वर्क सिस्टम है, ऑफिस सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंट इमेजिंग है, नॉलेज वर्क सिस्टम में इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन है, ग्राफिक वर्क स्टेशन है, मैनेजरियल वर्क स्टेशन है, देन डीएसएस है, सेल्स रीजन एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट. ये सारी चीजें जो है वो आपको समझाने के लिए बताई हुई है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ MIS सिस्टम्स. के बाद यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. आप इनमें से नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर अवेलेबल, यू कैन चूज एनीवन. जो भी आपको लगे कि प्रॉपर है वो आप दे सकते हो. जैसे कि मैं एक रीड कर रही हूँ, दैट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल. ने पिछले जो आपकी PDF है उसमें भी दिया हुआ था कि वो सिस्टम जिसमें पीपल हो, इक्विपमेंट हो एंड प्रोसीजर हो to gather, sort, analyze, evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision maker. ये कोटलर और लेन ने दी थी. जे कैंटर ने जो दी है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट एड्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को ऐड करती है इन मेकिंग, कैरिंग आउट एंड कंट्रोलिंग डिसीजन. तो आप इनमें से लर्नर्स कोई भी एक डेफिनेशन को चूज करके जो आपको लर्न होती है वो आप एक्सप्लेन कर सकते. Next is why information system. Information, why management information system? MIS की जरूरत क्यों पड़ी? MIS की जरूरत क्यों पड़ी? वही चीज है कि अगर हम
चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर वर्क करे, इसको वो प्रॉफिट अर्न करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कर सके, लेस टाइम में प्रोडक्शन कर सके, हाईली क्वालिफाइड जिसमें वर्कर्स हों, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास मीन्स हमें MIS की ज़रूरत पड़ी। So about 80% of an executive times are devoted to information receiving, communicating and using it. कि जो 80% टाइम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बनवाना पड़ेगा, क्यों उसको ऑटोमेट करना पड़ता है, क्योंकि 80% ऑफ द एग्जेक्टिव टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने को, उसको कम्युनिकेट करने में ही लग जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वर्चुअली ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन organization. Best use of two key ingredients in organization are people and information. Next is effective utilization of information system in management. Now there are some example of MIS: airline reservation system, bank operation system, integration of department with the help of contemporary software like ERP, logistics, train reservation, ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर आते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स गिवन है, आपको फिलअप्स भी गिवन है और इनके आंसर भी आई, शायद आप शायद नहीं, पक्का आपके बुक में है, ठीक है। तो ये जो आपके बैक पे लर्नर्स क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी कर सकते हो, इनके आंसर्स भी गिवन है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। MIS के डिफरेंट टाइप्स ऑफ MIS क्या क्या है, डेफिनेशन MIS की आपको पता होनी चाहिए, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ MIS ये आपको पता होना चाहिए। यस, सो नेक्स्ट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MIS। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MIS करने से पहले लर्नर्स में आपको बताना चाहती हूँ दैट आई हैव चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस, जिसके ऊपर आपको ये जो लेक्चर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लर्नर्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्यूटर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो डाल रही हूँ इसमें। इसमें मैंने सी स्टार्ट करी है, सी के ऊपर आपको आने वाले टाइम में जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सी लैंग्वेज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MIS। MIS के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्लानिंग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। देन इन्वेंट्री एंड मटेरियल मैनेजमेंट, यस, effectual management of finished goods, work in process and raw material is critical to the entire operation. MIS system provides a highly healthy and structured material management system. Everything you need to accurate control means अगर आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है उसमें इन्वेंट्री को मैनेज करना, प्रोडक्ट कोस्ट को मैनेज करना, मटेरियल को टाइमली प्रोवाइड करना, उसके लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। So from material procurement to the allocation of finished products, it permits you to administer important inventory information with a multi-attribute item card. Next is finance and accounting. MIS takes care of complete financial accounting of the enterprise over the web. It maintains all the books and records that are essential for the proper bookkeeping. Means अगर आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपकी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपको डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स मीन्स आपने अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना है फास्टली और एक्यूरेट, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है। सो MIS हेल्प इन मैनेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस। नेचुरली आपको पता है कि आजकल जो गवर्नमेंट है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है। तो टैक्स को मेंटेन करना, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री, कैश एंड एवरीथिंग एल्स that is required for efficient and complete financial accounting, modules for bookkeeping and making sure the bills are paid on time. तो ये ledgers को maintain करना, fixed assets और को maintain करना, treasury को maintain करने में भी helpful होती है। So these are the components of MIS. Next is purchasing. Manage all purchasing activities from preferred vendor selection to the entering bids, and from purchase order admission to receiving and inspecting the materials as they receive.
Empower the purchase functions, अपने managers को empower करना, like sales, intents, orders and MIS. Next is manufacturing and logistics. MIS fully featured manufacturing functionality assist you to manage your work in process कि अगर आपकी कोई प्रोडक्शन हाउस है उसमें काम चल रहा है उसकी एक्टिविटीज को मेंटेन करने में इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर प्रोडक्शन स्टाफ विद लेबर सेविंग फीचर्स कि कम से कम लेबर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके एंड मेक अवेलेबल मोर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड शेड्यूलिंग सो क्विकली जनरेट work orders from planned orders. So maximize manufacturing efficiently with automated back washout, infinite and finite loading backward and forward scheduling में भी ये आपको help करता है. Next is material management, control purchasing of raw material. Raw material कहाँ से purchase करना है to build products, manage inventory stocks, inventory को manage करना, order enter करना, processing automates the data entry process of customer order and keeps tracks of the status of orders. So warehouse management maintains records of warehouse goods and process movement of products through warehouses. Transaction management arranges, schedules, and monitors delivery of products to customer via trucks, trains, and other vehicles. Project management monitors cost and work schedules on a project by project basis. Plant maintenance sets plans and oversees upkeep of internal facilities. कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट जिसको हम CSM बोलते हैं इट एडमिनिस्टर्स इंस्टॉल्ड बेस्ड सर्विस एग्रीमेंट्स एंड चेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वारंटीज व्हेन कस्टमर कैन कॉल फॉर हेल्प. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल. इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ MIS. क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो क्वालिटी का ही नहीं होगा ठीक है तो उसका कोई यूज नहीं है. ठीक है तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना for the production of goods. By implementing an MIS system, you are now taking the first step in improving quality control across your entire operation. So MIS takes that level of quality a step further with specific quality focused tools to help out your company in achieving optimal quality control in excess of your products, performance and procedures. So preserve a high level of product quality with a complete inspection procedure from raw material to the finished products. तो MIS आपकी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन. जैसे आपको पता है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है. सो compete seamlessly in today's global marketplace with MIS extensive multi-language and multi-currency capabilities. So MIS आपकी हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में प्लेस करने में. So MIS is designed to hold a business that operate locally or globally. Language and currency need not be a blockade to conduct business with multi-language and multi-currency capabilities. MIS can be implemented. Means MIS ऐसा होना चाहिए जो multi-language और multi-currency को क्या कर सके handle कर सके. Next is budgeting. You can implement a complete budgeting and performance analysis. MIS enables you to manage all aspects of sales, rails system, offering all variance reports and periodically generating quotations on customers, book sales order and make deliveries. Next is funds management. MIS enables you to manage your funds efficiently. For each, MIS maintains your competent customer database and does kind of transaction specified to see its effect on flow controls. Next is extensive sales analysis. Sales analysis reports give you total sale कि आपकी जो है वो वीकली मंथली कितनी सेल हुई है टोटल सेल के बारे में MIS आपकी हेल्प करता है वो बताने के लिए. So it also help in transaction and the specification of funds movement. Next is retail. MIS includes a point of sale billing system with a barcode label, reading and printing, quick billing and collections. Next is inventory. MIS offers total inventory management for all kinds of business with unlimited products,
grouped as appropriate quality control valuation on multiple bases to handle stock ledgers and list ABC analysis, fast moving consumer goods, dead stocks, aging analysis and more. So MIS आपका हेल्प करता है कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो डेड हो रहे हैं या डेड हो जाएंगे, कौन सा स्टॉक डेड हो गया है, कौन सा एजिंग प्रोसेस में चला गया है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स दैट इज FMCG. Next is asset management. The system maintains complete record of fixed assets with all details of the assets and their locations. Next is branches and profit centers. So we can integrate and perform accounting for an unlimited number of branches and profit centers using MIS. So these can be grouped as required. So अभी तक हमने जो डिस्कस करा वो कंपोनेंट्स करे MIS के. Yes learners, आई होप कि आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझ आ गई होगी. तो आप इसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो है वो क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट इज MIS एंड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन. तो MIS इज एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन. आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, इट इंक्लूड सिस्टम ब्लूप्रिंट्स, requirements, procurement and groundwork examination and psychoanalysis. So groundwork examination include the problem, magnitude and the scope, alternatives, viability and requirement. Psychoanalysis include knowing the primary and secondary users, asserting user needs, primary and secondary resources of information, design, development and implementation needs. And system blueprint includes inputs, processing, output, storage, procedures and human resources. Requirement procurement includes compatibility, cost effectiveness, performance standard, after sales service, configuration and portability. Next is developing MIS do's and don'ts. Once you are in the process of developing MIS, or rather make up your mind to implement MIS, the best way to accomplish some homework which can facilitate in finding out what is right and what is wrong. So learners, in the next lecture I will explain do's and don'ts and the further जो आपका पार्ट रह गया है वो आपके नेक्स्ट जो कमिंग हमारा सेशन होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी. लिमिटेशंस, स्टेप्स फॉर अवॉइडिंग पिटफॉल एक्सेट्रा. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, तो जो इसकी बैक एक्सरसाइजेज है, जस्ट आई वांट टू गाइड यू कि लर्नर्स आपने ये जो बैक एक्सरसाइजेज है ये नहीं छोड़ने. कई बार इसको लेके क्वेश्चन आपको आ जाते हैं और आपको पता है कि इन सारे बैक एक्सरसाइज को के क्वेश्चन के आंसर भी आपको आपके बुक में गिवन है. आपके ट्रू फॉल्स के आंसर भी आपको मिल जाते हैं यहाँ से. ये बैक एक्सरसाइजेज जो है वो आप ये देखो सॉल्व है, तो ट्रू फॉल्स के आंसर आपके पास है, तो आप इनको यहाँ से भी कर सकते हैं. सो फॉर टुडे आज के लिए सिर्फ इतना ही. जो आपके क्वेश्चन रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी. थैंक यू.